Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV physics class. So, this is basically problem set for your laws of motion for your class NEET JEE. So, this is problem set theory already I have discussed. Now, typically 8 to 10 question I will be discussing, and if you keep practicing on this, then you will obviously get common of these questions. Okay. So, now let's discuss with problem number 1. Read the question. An object of mass 3 kg is at rest. Now a force of F is F equal to 6t square I plus 4tj is applied on the object. Then the velocity of the object at t equal to 3 seconds will be what? Now, so इन इस प्रॉब्लम को आप करने के टाइम आप क्या क्या गलती करोगे आप देखोगे. सो आपको लगेगा एक्सीलरेशन a इक्वल टू f ओवर m. नाउ दिस इज 6t square जो प्लस by this is by 3 and 4 t over 3, this is I cap and this is j cap. Okay, now if it is velocity equal to u plus ft, so t equal to 3 second पे है ना. First it was initially at rest, so this is 0, so ft, so इससे t से मल्टीप्लाई कर दोगे. So v equal to and this acceleration जो है आपका t equal to 3 सेकेंड. सो क्या होगा आपका t equal to 3 सेकेंड मतलब 339 equal to 18 I कैप प्लस इधर क्या होगा t equal to 3 आगे बैठाओगे तो क्या होगा 3 4 j कैप. सो 18 I कैप प्लस 4 j कैप, 18 I कैप प्लस 4 j कैप. दिस आंसर इज हियर. सी ये आंसर आप सीधा कर दोगे. So you will get a big zero because the velocity is time dependent. This is not linear. Okay, you cannot put just t equal to this and this. Okay, so in order to tackle this question, now the real answer is how you have to tackle this object. So acceleration, so dv dt, so it is इंस्टेंटली चेंजिंग है ना. सो ट्वाइस टी स्क्वायर, दिस इज है ना टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप. सो वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी जो 3 सेकेंड है ना, ट्वाइस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप है ना. So dt. Okay, so now let's see at t equal to 3 second. Okay, so now this is obviously you get integrations of this. So 2/3 t cube है ना. So 0 to जो है आपका 0 to 3 प्लस 4/3 t square by 2. Okay, 0 to 3, this is I cap, this is j cap. This is how much? So 9 है ना, 3 3 9 and 9 27 18 I cap. So this is 18 I cap प्लस जो है यहाँ पे कितना होगा 339 जो है आपका कितना होगा ये 2/3 and इधर 9 है ना, 6 j cap. 18I plus 6j cap. So this will be the actual answer because the velocity is time dependent and it is changing with time. So integration you know, so simple integration formula आपको अब जो लोग हम क्लास 11 में पढ़ रहे थे उनको इंटीग्रेशन पता नहीं ना. So t square का जो इंटीग्रेशन या जनरली I will write t to the power n इंटीग्रेशन जो है dt इक्वल टू जो है t to the power n plus 1 over n plus 1 plus constant. So this is the integration and if you get derivative of this, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा आपका d dt of
t to the power n plus 1 by n plus 1 equal to how much? So this is इक्वल टू टी टू द पावर एन। सो इसका डेरिवेटिव अगर ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा दिस। सो इफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन विल बी दिस, है ना। इस तरीके से आप याद रखना है। ओके, नंबर 2, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय 20 minus 2t, where f is in Newton, this is f equal to this one, and t is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. Okay, what is the average impulse imparted to the force? So ऐसा कुछ गन है ना, तो इस गन से बुलेट निकला, इस गन से जो है दिस f equal to 20 minus 2t, है ना। ये बुलेट गन के अंदर से जा रहा था, फिर बैरल से ये निकल के आ गया इधर, है ना। सो नाउ जैसे ये बुलेट यहाँ से निकल गया, फोर्स ऑन द बुलेट बिकम, जैसे गन से निकल गया तो बैरल के अंदर से निकल गया तो इसका फोर्स 0 हो जाएगा। सो दिस इज f इक्वल टू 0। सो t इज हाउ मच? t इज 10 सेकेंड। सो एवरेज इम्पल्स कितना होगा? एवरेज इम्पल्स मीन्स force into time, and impulsive force impulse जो है ओवर टाइम जो है small instantaneous time. So average impulse means as a function of t. So f dt 0 to t. So average impulse है ना, impulse means जो इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। Okay. Now the force is 20 minus twice t dt, कितना टाइम तक गया था? 0 to 10 सेकेंड। ओके, नाउ अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, जो लोग 11 में है उनका क्या होगा? इसका 20t, ओके 20t 10 0 to 10 माइनस 2 जो है 2 t स्क्वायर बाई 2, ओके t स्क्वायर बाई 2, ओके। So 0 to 10, है ना। So this is 200, है ना, this is 200 and this is 100, this is 100, है ना, 10 10 100, so 100 Newton second, 100 Newton second, okay। So this is the average impulse, okay। Number 3, a 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust is how much? G is at 10 meter. So this is it. So this is the rocket, okay, this is the rocket, and initially and there is a gas ejected here, okay। So gas, so how much gas ejected, so that it will, so minimum condition in just remember even the theory classes, where if your exhaust speed is u and ये जो आपका ये रेट जो है ना needed जो है how much gas ejected, so this is u dm dt, है ना, कितना मास इजेक्शन हो रहा है, मतलब कितना गैस उसका कॉम्बसन हो रहा है ना, इनिशियल इसका स्पीड एंड गैस का स्पीड एंड कितना मास कॉम्बसन इक्वल टू, एंड दिस m इनटू एक्सीलरेशन, है ना। हियर दिस इज द mg, बेसिकली दिस इज mg, है ना, ताकि ये जस्ट ये उठ सके। बट सी हियर 20 जो इनिशियल जो है आपका initial acceleration है 20 meter per second. So in that case this is u equal to 800 meter dm dt. So this is the basic equation you have to remember. Every rocket's problem is depend on this equation only. This is the basic principle of this equation, okay। So ये u dm dt equal to how much? m is 5000 into जो है यहाँ पे initial acceleration भी है, so g is 10 meter plus 20, है ना। So you have to calculate dm dt, okay।
So this is the problem. If you know the theory, and easily you can solve the problem. Okay, how much dmdt, मतलब how much mass is combustion per second, and गैस जो इजेक्टेड गैस का जो स्पीड है, दिस इज द अमाउंट एग्जॉस्ट स्पीड है ना, 800 मीटर पर सेकेंड, एंड कितना रेट में ये हो रहा है उसके ऊपर ये कहना, क्योंकि यू डीएमडीटी इज फोर्स एंड दिस इज द फोर्स, सो इक्वेशन बैलेंस. ओके, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन. ओके, नंबर 4, a body of mass 3 kg hits on a wall at an angle 60 degree and returned at same angle. The impact time was 0.02 second. Okay, the force exerted on the wall. So this is the wall. So this is the zero axis. Okay, so a body, this is hit at 60 degree. Okay, and again it is going this side. So this is the ball of 3 kg, एक body mass, एक कुछ mass है ना. So it is now. See, this is in how much initial speed? Initial speed is, so this angle is how much? 30 degree. And if you component this, if you this is, and this angle will be also, this angle will be 30 degree also. Okay. So initial speed is how much? If it is initial speed is u जो है आपका, this is 30, so initial u cos 30. Okay, u cos 30, and रिफ्लेक्शन में ये इधर क्या होगा आपका, दिस इज ये एंड दिस, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, सो दिस इज 30 डिग्री. अगेन दिस इज इनिशियल एंड फाइनल क्या होगा आपका, फाइनल इज माइनस u cos 30. So how much change in velocity? So change in momentum, change in momentum कितना हो रहा है, how much? So ये u cos 30 माइनस ये m माइनस जो है माइनस ऑफ m u cos 30 again. So how much it is? Twice m u जो है cos 30. So twice m. So how much impulse is change in momentum? Now rate of change. So rate of change, the impact time is now. So impact time is very much less. So this is called impulsive force. So this portion is just आपका जो है आपका change in momentum. So this is impulse. Last question I have seen na, FDT. FDT is impulse. And if it is by dt, then it is impulsive force. So impulsive force, the force exerted on the wall will be total जो आपका twice m u cos 30. So twice m is how much? 3, u is 10, and cos 30 is root 3 by 2. So this is the change in momentum. So this is change in impulse. Impulse equal to, and impulsive force equal to impulsive force equal to how much? This over time, instantaneous time, how much? So 2 into 3 into 10 into root 3 by 0.2 into 2. So this is how much? 2, 30 and 15. So root 3. Okay, this one. So one type of question, obviously we will get impulsive force, impulse, how much, so you change in momentum, इस type of question आपको मिलेगा. So you can solve this. Okay. Problem number 5. A cell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in ratio 2:2:1. If the fragment is having equal mass, fly off along the mutually perpendicular direction with the speed v, then speed of the third, जो lighter one of the fragment is how much? Okay. Now see, so this is one kind, एक जो है bomb है ना, one mass जो है cell, so it is explode है ना, it is explode. So now equal mass है ना, so equal mass, it is now if plotting the equal mass explode
in this direction, and another one is so equal mass. So this is how much? 2 by 2 by 5. So I can calculate is 2 by 5 m. Okay, if it is mass of m, this is also 2 by 5 m, and this is 1 over 5 m. So this is 2 by 2 is to 2 is to 1. Okay, this mass. Now you have to, so this fragments is equal mass fly up along mutually perpendicular direction. So this is mutually perpendicular direction. This is 90 degree. Okay, and the speed with speed, this is v, and this is also v. Okay, now the speed of the third one, ये lighter particles 1 by 5 m इस मास का स्पीड कितना होगा एंड किस डायरेक्शन पे होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. See, so you just apply the conservation of momentum. So along the y-axis the momentum will be v जो है ये आपका theta, ये नहीं, this is will be 45 degree. So v sin theta and this is 5 sin theta and ये cross हो रहे. So along, so you apply ये जो है conservation of momentum, conservation of momentum. So momentum conservation always is in elastic and elastic everywhere, है ना? But energy is not conserved in elastic. So see, momentum conservation how much? So this is initially x-axis and momentum is 0, and then so 2 by 5 m v, how much? This is cos 45 degree plus 2 by 5 m is how much? M cos 45 degree and प्लस इसका वेलोसिटी पता नहीं है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए ये आपका कैपिटल V. लेट्स सी 1 by 5 m v है ना, ये वेलोसिटी कौन डायरेक्शन में होगा हम कैलकुलेट करेंगे. नाउ सी, सो 2 by 5, सो 2 by 5 m. सो थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना. नाउ सी हियर, let's see here 2 by 5, so 2 into जो है 2 by 5 m है ना, cos 45 जो है cos 45 degree equal to 1 over 5 m v. So हाँ, so v, so this will be minus है ना, दिस विल बी माइनस, मतलब इसको माइनस, तो ये इधर आएगा. सो इसका वेलोसिटी क्या होगा? सो वेलोसिटी v इक्वल्स 1 over 5 m कट गया है ना. सो cos 45 1 पर √2. ओके, सो v इक्वल टू माइनस 2 √2. ओके, सो दिस इज द cos 45 into cos 45 mv है ना. So here mv and v and this is also v. Okay, here this will be v. So 2 √2 v है ना. So इसका जो है ये अगर ये एक्सिस है, so इस एक्सिस से ऑपोजिट डायरेक्शन पे इट विल गो. So along माइनस i डायरेक्शन, स्पीड इज 2 √2, इसका जो वेलोसिटी ये. So just applying your momentum conservation, or different types of problem you have to solve. So whether you have to resolution the equation in horizontal plane, momentum conservation equation in vertical plane also. So this is the procedure of cell, bomb, burst and everything, and calculate how this type of motion, टुकड़ा बहुत सारे टुकड़ा इधर चला गया. So you have to just apply your momentum conservation. So and in x plane and as well as in y plane, it is a procedure to calculate these types of problems and to handle this problem. Okay, problem number 6. Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of a massless string. The string passes over a frictionless pulley. The string, two masses 4 kg 6 kg, this passes over the frictionless, this is pulley. Okay, and the acceleration of the system in terms of g. ये कैलकुलेशन हमने जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, ये बड़ा प्रॉब्लम हमने किया था, है ना, याद है. सो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? हायर मास इज दिस वन,
so acceleration will be this direction. So latest acceleration is a. Okay, so t will be this one and again t will be this one. So टेंशन है ना. सो जो है आपका सिस्टम में जो है आपका आप कैसे कैलकुलेट करोगे. सो आपको जो है टी माइनस जो है 4, यहाँ से टी माइनस ये 4 इधर 4g mg टी माइनस 4g इक्वल टू ये एक्सेलरेशन अगर ये है ना एक्सेलरेशन जो है आपका 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन से जा रहा है. सो दिस इज द इफेक्टिव फोर्स है ना. टी इसको खींच के लेके जा रहा है नीचे -4g एंड सिस्टम का एक्सेलरेशन a. सो m इंटू ए. सो ये वाला इस साइड के लिए ये इक्वेशन एंड इस साइड के लिए क्या होगा आपका एक्सेलरेशन इधर है ना. एक्सेलरेशन इधर होगा तो कितना एक्सेलरेशन है आपका ये आपका जो है 6 kg है ना. 6 kg जो है 6g माइनस है ना t इक्वल टू हाउ मच 6a है ना. 6 kg माइनस जो t इक्वल टू ए. सो हाउ मच. सो ये आपका ऐड कर दोगे. सो this is this 4g twice g. So this is twice g equal to 10a. So a equal to 0.2g. So this will be the acceleration. So in terms of g is 10 meter per second square है ना. So this is the in terms of acceleration in terms of g. Okay. Problem number 7. A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge. ये आपका smooth inclined wedge. Okay. Now the wedge is given acceleration towards right. So ये इस साइड में acceleration दे रहे हैं ना. The relation between a and theta, ये acceleration से ये move कर रहे हैं ना. For the block to remain stationary and the wedge. So इस टाइप का एक ब्लॉक है ना. So ये आपका acceleration ये आपका यहाँ पे ड्रॉ करना है. So this is your mass. Okay. So this is your normal force and this is your जो है आपका and this is along this direction. अच्छा sorry. This is normal direction and this is mg. This is theta. So again this will be theta. Okay. So this is n cos theta, this is n sin theta and ये इधर क्या होगा आपका इसका सेंटर ऑफ मास बराबर ये आपका इधर जो है ग्रेविटी बराबर ये आपका ma. दिस इज ड्यू टू ये आप इस तरह के एक्सेलरेशन लेके ये इट इज मूविंग विद ए एक्सेलरेशन दिस वन से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग दिस डायरेक्शन. सो नाउ इफ इन द इक्वेशन जो है n sin theta इक्वल टू ma एंड जो है n cos theta इक्वल टू mg है ना. सो a इक्वल टू g tan theta. ये आपको डिवाइड कर देंगे है ना. डिवाइडिंग 1 डिवाइडिंग बाय 2. सो ये रिलेशनशिप मेंटेन होगा तो ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो दिस विल बी रिमेन स्टेशनरी. सो इस वेज के ऊपर अगर ये मूव नहीं करेगा सो दिस ब्लॉक विल बी कमिंग डाउनवर्ड. बट इफ द ब्लॉक इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट साइड देन it may remain on stationary on this block provided acceleration will be g tan theta. So this is an important problem. So if to इस टाइप का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आ जाएगा है ना. Problem number 8. A balloon with mass m is descending down with an acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with acceleration a? So ऐसा एक बैलून है ना. ऐसा एक बैलून है जो है बैलून इट विल स्टार्ट एज डिसेंडिंग है ना. डिसेंड नीचे तरफ जा रहे हैं ना विथ एक्सेलरेशन a. सो इस टाइम में आप बैलून के ऊपर क्या काम करते हैं एयर का बायोंसी. ये फोर्स इज F and this is here mass of mg. So first equation is which one is the greater mg क्योंकि ये डिसेंडिंग है ना. ये इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं. mg माइनस f इक्वल टू
इसका अगर एक्सीलरेशन ए से नीचे आ रहे, सो दिस विल बी m into a. नाउ someone is removing mass, इसका मास यहाँ से जो है, ये यहाँ से मास रहता है ना बैलून का, तो बैलून से मास हटा रहे है ना, जैसे यार बैलून में लोग इधर चढ़ते हैं ना, तो यहाँ से किसी को फेंक दिया, चलो तब फिर बैलून ऊपर उठ जाएगा, है ना। या रेत की बोरी रेत की जो है बोरी वो वहाँ पे रहता है, उसको फेंक देता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये आपका गैस बैलून जो है इसमें इस टाइप का दिखते हैं ना, सब घूमते हैं वहां पे। नाउ सी, सो लेट्स सी, दिस इज मास m0, है ना। सब नेक्स्ट another case, another balloon, it is in case it is going upward, force F and now with acceleration a से ऊपर जा रहे, इसका मास क्या नाउ m into a minus m0, है ना। आप नेक्स्ट द इक्वेशन विल बी, दिस इज इक्वेशन 1 and next equation will be this force is higher क्योंकि ऊपर जा रहा है, माइनस m0 into g इक्वल टू कितना हो रहा है, m माइनस m0 इंटू जो है a, इस एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है। आप इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है ना, ये ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ऐड करने से आपको m0 निकालना है यहाँ से, है ना। सो ये f कट गया, mg है ना, mg जो है आपका इधर mg ff कट गया, इधर माइनस mg प्लस m0 इंटू जी इक्वल टू, उधर क्या होगा आपका ma प्लस ma माइनस m0 इंटू ए, है ना। सो इधर क्या होगा आपका m0 इंटू m0 कहाँ है, ये mg कट गया, सो m0 इंटू g प्लस a इक्वल टू ट्वाइस ma, सो m0 इक्वल टू ट्वाइस ma बाई g प्लस a, सो दिस इज द, है ना। सो दिस इज द this is so m0 is in terms of जो है ट्वाइस a बाई जी प्लस इंटू एम, सो दिस इज द बेसिकली इतना मास आपको यहाँ से हटाना है ताकि वो आपका बैलून ऊपर चढ़ जाए। सो दिस इज द बेसिक केस नंबर 9. सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, द मास ऑफ द लिफ्ट विथ पर्सन्स is 2000 kg when the tension in the supporting cable is 28,000 Newton, then its acceleration will be upward or downward. So this is the lift where बहुत lots of person is there. So tension, so this is tension T equal to how much, this is ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है I don't know, and this is the mass, this is 2000 kg and tension is 28,000 Newton. Okay, see, and then acceleration है ना, इतना आपको पता है, so tension इतना, kg इतना and acceleration. So outward, so in the lift equation you know, so here basically this is the total the mass m ma है ना, ये दिस इज mg है ना, एक्सीलरेशन आपका जो है ऊपर जा रहे हैं नीचे, सो आपका ये देखिए टेंशन दिस वन इज 28,000 है ना, एंड दिस इज एंड यू इफ यू कंसीडर g इक्वल टू 10 देन mg इक्वल टू हाउ मच 2000, सो mg इक्वल टू 2000 है ना। सो लिफ्ट विल बी, सो इसका मास कम है, इसका टेंशन ज्यादा है, मतलब t माइनस mg equal to ma. So T is how much, 28,000 minus 20,000 है ना, equal to 2000 into जो है A. So A equal to जो है 4 meter per second square. So acceleration tension is higher, then it will go upward. इस टाइप्स का प्रॉब्लम आपको कभी नहीं, कुछ नहीं, डिफरेंट टाइप्स में टेंशन दिया हुआ तो आपका एक्सीलरेशन निकलना है, एक्सीलरेशन दिया हुआ तो आपको टेंशन निकालना है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके,
थैंक यू, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। एंड ये सब जो प्रॉब्लम आपका जो है, ये जो 8-9 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, एंड your problem you will get most of this common from this problem. So you just practice it, different types of modules and everything, and you see the link, different types of problems that I will be given in the link of this video. Then आपको जो practice करना है, ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।